Hello guys, this is Sayyid Mohammad Ahmed Hashmi and today we will talk about English morphology. English morphology को समझने से पहले we need to understand that how the sounds are produced. Okay, the main area is called phonetics. So what do we do in phonetics? Like when I'm speaking, my speech organs are working. I'm speaking any language, जैसे कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, still my speech organs are working. Okay, if I am speaking Punjabi, Persian, Arabic, any language, my speech organs are working. It means that this is same for all languages. So this is the big field, big concern of phonetics, that in which we produce something, our speech organs are used. Then comes what? We need a media. So that is called the transmission. We need transmission of sounds. And finally, what do we need? We need reception. वो हमें सुनने की ज़रूरत होती है. So these three things we discuss under the umbrella of phonetics. Okay, we have developed sound, those have been transmitted, and now those sounds have been also received. Now what? We are producing specific sounds. Those are not general sounds. For example, if I'm talking about English language, I know sounds. If I'm talking about Urdu language, I know sounds. Likewise, the Punjabi, the Arabic, the Persian, or any other language. It means that phonological system, that is something different from phonetics. Phonological system is language specific. For example, in English morphology, in English system of language system, we do have 44 sounds. Some of them are consonant sounds, there are vowel sounds. So it means that when we produce sounds, we need to join them to develop syllables, and when we develop syllables, we need to join them to develop words. So in English morphology, we talk about the construction of words. हम उनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से एक वर्ड डेवलप हुआ है. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ सिलेबल्स, जो कि बाजुकात वो जो मॉर्फीम्स होते हैं, जो उसका यूनिट है, वो इंडिपेंडेंट भी स्टैंड करते हैं और बाजुकात इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं करते. लाइक आई से दैट इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट इन भी इंडिपेंडेंट स्टैंड करता है, कंप्लीट भी इंडिपेंडेंट स्टैंड करता है, और ये मिलके बनता है incomplete. It means that कि अब जो word बन रहा है, that is totally different from their constituent meanings, जिनसे मिलके वो बना, उससे मुकम्मल उसका जो है वो मीनिंग डिफरेंट बन रहा है. सो इस तरीके से हम मॉर्फोलॉजी के अंदर एक वर्ड की का एनालिसिस करते हैं साइंटिफिकली, ऑन साइंटिफिक बेसिस. और दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी. ओके, if we carry on, the next thing is we talk about, as I told you, that we talk about words, then those words join to form sentences, complete ideas. In this way we convey our messages. For example, if I want to introduce myself, I say I'm Ahmed. So in this way we join these words to develop sentences. In this way we do have complete ideas, and we use dictionaries to find out the words of the meanings of specific words, and to get the idea of words, how we can use them, in what context we can use them. So number one, here we talk about words as meaningful building blocks of language. When I say I am Ahmed, I do have three words. I am Ahmed. It means that if I want to, develop this sentence, I need building blocks. And these three words serve as building block. So the first idea is that if we need to convey our message, we need to have a dialogue with any person, we need words. In this way, those are called the building blocks of language. The second thing is that as we say that अगर हम डिक्शनरीज में जाते हैं, हमें पता चलता है what is sentence. Sentence is not a single word, that is a group of cluster of words with a complete idea, complete sense. But the exception is that when I say fire, what does this mean? Isn't it a complete idea? When I say chair, isn't it a complete idea? Chair itself is a complete idea. If we go to dictionary, we just write word chair, वो हमें पूरा उसका मीनिंग बताता है, पूरा आइडिया उसके बारे में प्रोवाइड करता है. तो क्या लगता है कि क्या सिंगल वर्ड एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकता? I am not saying that the definitions which are given into dictionaries about sentences, those are wrong. I am not saying that. But sentence itself is an idea. But that is simple a word. Anyhow, leave this topic. Okay, we need to carry on. For example, when we say a child tries to put words together, not to take sentences apart.
exactly. When we for example, when I'm just eating something and in input I say water. For example, when I say light, camera, action, these are three different words, but these three words do have the complete sense, the complete idea. So बच्चा करता क्या है? बच्चा एक वर्ड से शुरू करता है बोलना, then it tries to develop different sentences, sensible sentences joining those words. Okay, fine. Word is not just building block of language but meaning as well. Definitely, when I say I am Ahmed, or I'm a boy who just went up there, these are not just the building blocks, these are conveying certain meanings. And for these meanings, what do we need? We need dictionaries. हमें डिक्शनरीज की जरूरत है to get to know the true meaning of that particular word. Okay, the next thing, words are unit of language which are basic in two senses. Okay, अब हम वर्ड की स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि वर्ड एक क्या फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स क्या किस तरीके से अपनी वैल्यू डेवलप करते हैं. सो नंबर वन, in that they have meanings that are unpredictable and so must be listed in dictionaries. There are so many words I do not know. So what do I have to do? I have to go to dictionaries to get to know about their meanings, true meanings. So पहला वर्ड का ये है कि वर्ड्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल मीनिंग्स रखते हैं. डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड्स, दोज इवन से दैट हमें उनके मीनिंग्स का भी पता है, but when we are using them we are not developing the same meanings as are written in dictionaries. Those are called contextual meaning. हमारी contextual meaning हमारे जो denotative meaning जो कि डिक्शनरी के अंदर लिखे हुए हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है बाज़ों का. सो मैं फर्स्ट जो है पॉइंट उसको दोबारा रिपीट करता हूँ. इन दैट दे हैव मीनिंग्स दैट are unpredictable and so must be listed in dictionaries. For example, I do not know about Arabic language, but somebody is speaking Arabic language. So what I have to do if I want to know the meaning, I need to go to dictionary. Exactly. The second thing is that in that they are building blocks out of which phrases and sentences are formed. जैसे कि मैंने पहले बात की, words building blocks हैं. If we want to convey our idea, we need to use words and those serve as the building blocks. So हमें दोनों senses का पता चल चुका कि words क्या क्या काम करती हैं. हम इन्हीं two senses के बेस पे हम मज़ीद discussion प्रोड्यूस करते हैं. Okay, words as types, as types and words as tokens. So the sentence which is given here, that is, Mary goes to Edinburgh next week and she intends going to Washington next month. So if I just count the words 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, this sentence consists of 14 words. It means that 14 tokens. But what if I say these are not 14 words exactly? Okay, if I say number 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 and 11, those are same. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5th and 13th words are same. 2 has been repeated one time and next also have been repeated one time. What does this mean? It means that what if I say that these are not 14 but 12 words. So the idea is that we do have 14 tokens but 12 types. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सेंटेंस हम डिवेलप करते हैं उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स डिवेलप हो रहे हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होगी. हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए कोई बिल्डिंग डेवलप करते हैं ना. फॉर एग्जांपल ब्रिक्स चाहिए बिल्डिंग डेवलप करने के लिए. इसी तरीके से अगर हम लैंग्वेज के सेंटेंसेस डेवलप करना चाहते हैं तो हमें इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए जिससे लैंग्वेज डेवलप होगी. दोज आर वर्ड्स. तो अगर हम जस्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड आर कॉल्ड टोकन्स. But if we talk about meaning, developing meanings, those are not tokens, those are types. So जो टोकन होता है वो किसी एक टाइप की डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है. जैसे कि यहाँ 2 दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसकी स्पेसिफिक मीनिंग सर्व कर रहा है लेकिन 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है. इट मीन्स दैट हमारे पास 2 टोकन है बट एक टाइप है. इस तरीके से नेक्स्ट की बात की जाए, 2 टोकन है और एक टाइप है. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड टोकन एंड वर्ड
type. Okay, the next point, words as building blocks relates to word token, definitely, as I said that. And characterization, that is called meaning. Words as meaningful units relate to word types, हमें पता चल चुका. But one thing more, अगर मैं ये कहूँ, there is also an ambiguity. जैसे सेंटेंस में और वर्ड में ambiguity थी, यहाँ भी एक ambiguity. How? If I say that, for example, week is written in one dictionary, for example, Oxford Concise Dictionary edition, okay, we take edition 6 or edition 3. The week is developed as something is there, some definition is there, but that definition quite changed in any other edition of same dictionary. It means that if I go to dictionary and I want to search up the word week, तो डिक्शनरी में एक ही इसकी एंट्री होएगी, एक से ज़्यादा एंट्रीज नहीं होंगी. उस एंट्री के अंदर इसकी मुकम्मल तफसील लिखी होती है. ओके, बट जब मैं किसी और डिक्शनरी में जाता हूँ, वीक पे जाता हूँ, वीक, वीक, तो वहाँ कुछ और डेफिनेशन लिखी हुई है. अब अगर मैं ये कहूँ कि डिक्शनरीज वर्ड टाइप्स पर डेवलप की जाती, नॉट वर्ड टोकन्स. फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्शनरी में 2 दफ़ा नहीं लिखा हुआ, टू एक ही दफ़ा लिखा हुआ है. वीक डिक्शनरी में 2 दफ़ा नहीं लिखा हुआ, एक ही दफ़ा लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है जो डिक्शनरीज हैं वो वर्ड टाइप्स पे डेवलप की जाती हैं, ना कि वर्ड टोकन्स पे. इट मीन्स दैट जो वर्ड टोकन होता है दैट इज स्पेसिफिक टू मीनिंग, और अगर उसको एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसको टोकन्स कहते हैं. सारी वर्ड्स टोकन होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टाइप्स होते हैं. बट अगर एक डिक्शनरी में एक मीनिंग लिखा है, दूसरी डिक्शनरी में दूसरा मीनिंग लिखा हुआ, तो एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स डेवलप हो रहे हैं. नाउ व्हाट? Don't you think these are tokens as well? So this is a kind of ambiguity between word types and word tokens. इसका पता होना लाजमी था, so मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. Okay, go to next slide. Words with predictable meanings. अब देखो, वर्ड के predictable meanings क्या हो सकते हैं? How can we say that? If somebody who is from Arabic language is here and I say that, okay, first of all, we need to understand what is prediction. The first point, do any words have meanings that are predictable? This is a question. How? For example, when the dog barks around me, I suddenly suggest that this is dog. If the cat voice is there, I just understand and develop an idea that cat is there. एक बच्चा बचपन से जिन चीज़ों को देखता आ रहा होता है वो उसकी तो प्रेडिक्शन कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो प्रेडिक्शन, because the voice of the barking of dog, that is not same in French as in English. That is something, the sound is different, not the bow wow, or that is a different kind of sound. So the sign is completely different in other languages. But the children who are just growing up and living in one society, for example, they're living in English society, they say that this is cat, this is dog. These words have been developed by the English people, not by the French. In French, there are different kind of words, there are different kind of signs for different objects, not the same as in English language, Urdu language, Punjabi language. But our instinct to listen thing, to hear thing, that is a kind of different idea. हमने जैसे we say काएं काएं, उर्दू में कहते हैं काएं काएं कव्वे के बोलने को, हमने इस चीज को अपने तरीके से परसीव किया है. इस काएं काएं की आवाज को फ्रेंच के लोगों ने किसी और तरीके से परसीव किया हुआ है, उन्होंने इसको अलग से एक आवाज का नेम दे रखा है. तो इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन एक लैंग्वेज के अंदर एक नेटिव स्पीकर तो कर सकता है, बट हु इज द लर्नर ऑफ दैट लैंग्वेज वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता. उसके लिए प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. तो इसका मतलब है कि अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, हम कहते हैं जी साउंड सिंबलिज्म इज ऑल्सो देयर. हाउ? देयर आर ऑल्सो, के लेट मी रीड द टेक्स्ट. There are also sets of words in which some similarity in sounds, say in the cluster of consonants as in the beginning, seems to reflect a vague similarity in meaning, such as smoothness or wetness, or both. In the set of words slip, slop, slur, slide, slither, sleek, slick, slaver and slug. अब ये जितने लफ्ज़ मैंने बोले हैं, इन सब के स्टार्ट में क्या आ रहा है? SL.
तो क्या ऐसी तमाम साउंड जिनके स्टार्ट में ऐसे लाता है, क्या वो सारी वेटनेस और स्मूथनेस से ताल्लुक़ रखती हैं? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम ये नहीं कह सकते। तो साउंड सिंबलिज्म दैट इज किसी हद तक तो काम करता है एक लैंग्वेज के अंदर, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इतने लफ्ज़ बोले जो कि लिखे हुए हैं टेक्स्ट के अंदर, ये सब किससे हम ताल्लुक़ रखते हैं? वेटनेस से और स्मूथनेस से। बट एसएल से शुरू होने वाला हर वर्ड तो स्मूथनेस और वेटनेस से ताल्लुक़ नहीं रख सकता। तो कैसे पता चलता है, हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? एक नेटिव स्पीकर प्रेडिक्शन कर सकता है, but not the learner of that language. He or she cannot predict. Okay, then comes the sound meaning relationship is even less direct than in onomatopoeia. Onomatopoeia is what? When we just understand or recognize sounds by their specific rise and fall, stress. जैसे कि कुत्ते की बोलने की आवाज़ हम जैसे उसको रिकग्नाइज करते हैं, बाऊ वाऊ से करते हैं। तो वो अब बाऊ वाऊ को हम इंग्लिश में तो कह रहे हैं, लेकिन फ्रेंच में बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आउ आउ करके वो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नॉट सेम एज वी यूज टू स्पीक। सो दैट इज डिफरेंट। साउंड मीनिंग रिलेशनशिप इज इवन लेस डायरेक्ट देन इन ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो कि नेचुरल साउंड्स होती हैं, हम उनसे डेवलप करते हैं, जो कि बच्चा बचपन से सुनता आ रहा होता है। बच्चा तो रिकग्नाइज कर सकता है क्योंकि बचपन से उस माशरे में रह रहा है। बट एक बंदा जो कि इंग्लिश जो है वो कल्चर में आके रहता है किसी फॉरेन कंट्री से, उसके लिए उस साउंड को उस तरीके से देखना जैसे कि इंग्लिश का बंदा देख रहा है, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट आइडिया। The next point, the idea that some words have meanings that are natural or predictable in this way is really left over from childhood. जो मैंने बात की, चाइल्डहुड से हम चीज़ों को सुनते आ रहे होते हैं, तो हम अपने इस तरीके से उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं और हम उसको ख़ास नाम दे लेते हैं। What kind of word do have predictable meanings then? जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक नेटिव स्पीकर कुछ वर्ड्स के लिए, बल्कि एक से ज़्यादा वर्ड और बहुत सारे वर्ड्स के लिए प्रिडिक्शन कर सकता है, बट लैंग्वेज का लर्नर नहीं कर सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स विद प्रेडिक्टेबल मीनिंग, किस हद तक ये प्रिडिक्शन हो सकती है। Then comes known words with unpredictable meanings. It is not necessary for a linguistic item to be the basic building block of syntax to have a meaning that is predictable. दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। The blocks of any language, the building blocks of any language and having certain meanings, these are two different kind of ideas. Okay, sometimes something that is clearly larger than a word being composed of two or more words may nevertheless have a meaning that is not entirely predictable from the meanings of the words that compose it. For example, I keep notes on all my expenditure. What does this mean? It means that I do have a record of all my money which I have just spent. ये meaning बन रहा है. Okay, the next sentence, I keep tabs on all my expenditures. Now the idea, if we say that in the first sentence we do have the complete idea, एक language का learner उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है उसको समझना. But the second sentence, I keep tabs on my all expenditure. What does this mean? So known words with unpredictable meanings. Here we do have 1, 2 in second sentence, tabs on, keep tabs on. 3 words. If I say that these 3 words join to form one idea. अब ये एक वर्ड वन आइडिया नहीं है, बल्कि 3 words 1 idea. This is what we call idiom. इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन वर्ड्स हैं जो कि डिवेलप होकर एक आइडिया बनाते हैं, उनकी प्रडिक्शन करने के लिए we need to be the native speaker of any language. We need to be a complete knowledge of that language. We need to live in that culture. We need to understand their customs. We need to understand their living style. In this way we get to know that what kind of idioms, what kind of proverbs they used to use in their society. इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In first sentence we do have 7 words, but in second sentence 2, 4, 6, 7. And in second sentence as well we do have 7 words, but the kind of vocabulary items, the kind of ideas which the words portray, those are different.
So in this way, if we want to understand the meaning of these kind of the meaning of these kind of sentences, we need to understand all their vocabulary items. So the idioms, those which we use in our own society, those are related to us, not to the other nations in the world. So the second thing, that is proverbs. Many proverbs fall in this category. Examples are: too many cooks spoil the broth. What does this mean? Having too many people involved in the task make it harder to complete. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्ड्स के मीनिंग्स कुछ और हैं, डेनोटेटिव मीनिंग्स कुछ और हैं, बट कॉनोटेटिव मीनिंग विच वी हैव डेवलप्ड एज ए प्रोवर्ब्स, ओल्ड सेइंग, ट्रेडिशनल सेइंग, कन्वेंशनल मीनिंग्स, दो आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डेनोटेटिव मीनिंग. सो इडियम्स और प्रोवर्ब्स की जो शेप्स होती हैं वो हर सोसाइटी के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर, हर कल्चर के अंदर, दोज आर डिफरेंट, they just vary. The second is a stitch in time saves 9. अगर हम इसका डेनोटेशन इसकी देखें, इसकी डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखें, that is completely different. But what does this mean? This means anticipating a future problem and taking care to avoid its less troublesome in the long run than responding to the problem after it has arisen. So it means that the words which they just show up their meanings, those are not the true meaning. There are also conventional meaning, contextual meanings are there in the form of proverbs and idioms. So we are done with this. So the conclusion, what is the conclusion? Words versus lexical items. Words are possessed two characteristics. Number one, they have meanings that are predictable and so must be listed in dictionaries. जैसे कि ख़ास लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरीज होती हैं, हर लैंग्वेज की अपनी थिसॉरस होती है जिसमें वर्ड फैमिलीज पड़ी होती हैं, हर लैंग्वेज का अपना वर्ड नेट होता है जिसके अंदर उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं, और वो उसके नेटिव स्पीकर के भी काम आ रहे होते हैं और उस लैंग्वेज के लर्नर के भी काम आ रहे होते हैं. द सेकेंड थिंग, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वर्ड्स एंड phrases and sentences. As we know that, as we have talked about a lot about that the words used to serve as the building blocks of the sentences, the language. So शुरू भी हमने इसी से किया था और एंड भी इसी कंक्लूजन पे करो. इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की. The last thing, although this may be broadly true, the two characteristics do not always go together. Yes, definitely we also talked about this. So this was all about today's video on English morphology. So if you really like my video, you need to subscribe to my channel, share and like my videos. Thank you so very much.